Great. Good afternoon, everyone. Hope the voice is audible. Great. So interesting conversations today. मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ. How many for English? हिंदी, गुजराती भी कर सकते हैं, बट सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा. सो हम थोड़ा सा हिंदी साइड पे ज़्यादा करेंगे. होप यू विल हैव टू कैच अप विद अस, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू कीप स्विचिंग इन द लैंग्वेजेस. So I am Dheeraj Bhojwani. I am from IIMA Ventures, which is a venture investment arm of IIMA Ahmedabad. We have been working with the kind of technologies that you see which impact rural and urban areas with DeepTech for quite a bit of time now. Some of you have been working with us in some capacity. So आज का जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं जिसपे how deep technologies which are proprietary technologies are impacting rural areas or the beneficiaries which stay in the rural areas. So थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग conversation करने वाले. The panelists that you see here in all capacities, they have been impacting this area for a very, very long time. You run incubators, you run startups, you have agencies who are working on ground with government. So इस तरह के personas आपको देखने को मिलेंगे. So पहले 15-20 मिनट के आसपास हम लोग conversations इस तरह से रखेंगे where I have some questions for them, but in any point of time towards the later point, if you have any questions from them, you can stay there and ask your questions to the panelists. So maybe going by the sequence, Balaji, we'll start with you. Maybe take about a minute about what Dvara e-dairy does, then I'll have a question for you. Yeah, hi all, I'm Balaji Lakshmanan, co-founder and CEO of Dvara e-dairy. We are a dairy accelerator where we take 2+ cattle owner and make them a 20 cattle owner. That is our goal. And for this, we provide loan, insurance, and cattle management services. And to deliver all these, we have built tech platform, Aadhaar equivalent for cattle, using images, again, using back images, side images, udder images, we are able to estimate the milk yield of the cattle, health of the cattle, the income of the cattle, the value of the cattle. The larger goal is to make cattle as an asset. जैसे हम two-wheeler को एक asset जैसे देखते हैं, वैसे cattle को भी देखना चाहिए, मगर अब it is not happening, right? So our goal is to sort of make the dairy farmer like an MSME, where cattle is an asset and the milk is an OPEX income that is coming, so that he or she gets more access to capital, insurance and cattle management services. That is our goal. Thank you. Great, Balaji. Impressed by your Hindi. So far, historically, we haven't conversed in Hindi anytime, so I was not aware about your language acquaintance. But help us understand that how different is it developing deep technologies or core technologies for the rural beneficiaries or rural geographies? Is geography important? Is customer persona important? You have been working hardcore with this kind of customer group. How different it is from anything that you've experimented in urban areas? Yeah, sure. So prior to this, I was heading the digital banking for a large, banking software player. So we have built tech for the sort of urban in that sense. पहले I'm a firm believer that technology can transform. हम सभी लोग हमारी लाइफ में भी देख चुके हैं कैसे just click of button you get almost everything. Amazon चाहिए कुछ orders, Zeptos, right? Insurance, whatever, right? वैसे हमारा मकसद यही था कि क्यों एक in a rural household, why not they should also get their regular services, right? And from day zero, when we start off building, one of the major challenges, unlike building for an urban, is first availability of the data, right? वही पहले challenge होता है, right? कैसे हम sufficiently large, for example, हम Aadhaar equivalent for cattle build कर चुके हैं. उसके लिए हम in our first cycle we have to collect at least 10,000 data, right? Our baseline accuracy with just normal algorithm only testing, it was 60%, okay, with zero data. With 10,000 data, it moved to 70%. With 50,000 data, it moved to 85%, okay? Right now, our accuracy is at 99.6%. For that, we have to go and collect close to about 2.5 lakh cattle data. आप imagine कर सकते हो, right? For which it takes time, effort, money, right? So the availability of the data is a major challenge जब हम वो technology को develop कर सकते हैं, right? So these are fairly deep tech, right?
and Gen AI will not solve some of these problems. For example, it wouldn't have solved, it wouldn't have looked at all this data in the first place because there is none available in the internet, correct? And of course, we'll also not publish it because we have spent a lot of time, effort, right, in terms of collecting. So collection of data is a major challenge. Who is going to do and how this is going to happen, right? So one of the key things is to first look at whether that problem, how deep it is and what kind of transformation it will bring. In our case, it was, हम सब ये आधार का impact जानते हैं, right? कैसे वो radically changed, before Aadhaar, I can claim I am Anand and you don't know, right? Now, I can prove that I am Balaji Lakshmanan, right? So, and that becomes a fundamental case. So, after figuring out the problem, the collection of data was hard. Second, another challenge is, see, when you also build a team, right? Especially for a deep tech, unka relevance, in terms of the understanding of the rural. So, हमारे team के लिए एक thumb rule है, in the first 2 weeks, they have to visit the field. They have to go and, experience our users and our customers, right? Only then, उनको समझ आएगा, मैं ऐसे develop करूँ तो ऐसे होगा, right? Otherwise, most of these guys are urban, semi-urban, right? But thankfully, in our case, we had to build the team through the COVID. So I had the opportunity to take people from remote. So let's say about 40% of my technology team is from rural, right? Who either have land or cattle, right? So that gave some additional help. But besides that, we made it a point to take them to the field, experience it. So उनको समझ आना चाहिए कि मेरे technology का impact ऐसे होगा, and that should enable the development. So this was the second challenge. So I can't put super geniuses urban in a AC room and develop something for the rural, right? That understanding. So this was second major challenge. The third essentially is, see, this is always built for the scale. एक कोई 1 lakh users के लिए नहीं, minimum 10 crore users के लिए, right? It's at a population scale, at an Indian population, right? So hence the number of cycles needed, right? So let's say if it's going to be an sort of an urban problem, I may need about 5 to 6 cycles to come to a reasonable level of convergence. Here it took us, because every time you develop, you have to go test it on the field, right? Uska cycle, right? So it took us, almost about 10 to 12 cycles before we came to a reasonable level that we are happy about, that we can release it for some of our partners to test and all that. So that cycle was, I would say, a challenge when you're developing for the rural. See, but most other things, for example, one of the classic things that people think is language is a problem. Nahi. Okay. All that is sorted out. Meaning now, let's say for us to add one new language, it takes not more than 2 days. Okay. So for, you have a lot of translators, and verifying things, right? So language is not a problem. But from a deep tech standpoint, understanding how the relevance of technology and how it will impact for the developers and the availability of the data. So these were some of the key challenges. And the ultimate beneficiary at the end of the day, the farmers, does he care whether it is through deep tech or not? He doesn't care, right? Most customers don't. Okay. I mean, and there is no award for doing it in the hard way, right? You do deep tech because there is no other way, right? So that we were very clear from day one. If something could be done through simple if-else loop, we will solve it. Because there is no other way, we were doing it through deep tech and AI and image processing and all that, right? So we were very clear on that from day one. So
so the users who take the solution and some pro-digital farmers who are going to be your first set of users, taking them enough feedback. For example, we still have close to about 20 WhatsApp groups from different states, each with at least 200 250 farmers, where we constantly हमारे whatever new releases are there, we take feedback. हम उसको वो कैसे देखते हैं, what more things we should change, right? I'll give you a classic example. So we did a campaign. So we have an app in the Play Store, Dvara Surabhi, so which has more than 9 lakh downloads now. So in terms of how to reach to more farmers, one of the campaigns we ran was, आप cattle का photo लीजिए, वो algorithm उसका health बता देगी, right? So this was one campaign. The second campaign was selfie with your cattle. Any guess which worked better? Any guess? How many for selfies? How many for health? Right? Yeah. So all of you are right. Okay. Selfie with your cattle worked much better than, checking the health. But, we sometimes think that, the understanding of the end user is sort of very important. Maybe first they will do a selfie, then they will do the health, right? So you need to understand sort of all that. So understanding those nuances and doing all those A/B testing, was interesting and a very good learning curve for us. Oh, great. A question to all of you. आप कितने लोगों को पता था there is a cattle Aadhaar kind of concept in India? आप अपने cattles के लिए एक unique identification बना सकते हैं. Were you aware about it? If not, these are the folks who are able to create that technology. I think more you can understand it at their exhibition stall if you want to know how the technology works. But at the same time, it gives a unique idea. There can be an Instagram-like solution for cattle also, in case people are very, very selfie-driven. One of you can start an Instagrams-like solution for cattle too. Absolutely. But moving in line, Pratik, coming to you, you guys have been working with state bodies for a very long time now. One thing that we need to understand, you have nearly population scale data. आप इतना सारा data monitor कर रहे हैं, observe कर रहे हैं, surveillance हो रहा है. What is the scale of this data? And ultimately, who's the beneficiary and what kind of impact is it generating? Specifically from the rural perspective. Sure. So first of all, thank you. It's my honor to represent Amnex here, right? So I'll start with what Amnex is doing. So Amnex जो है वो Ahmedabad based CMMI level 5 company है, and we have been working in the agriculture field from almost 7-8 years. Amnex अभी एग्रीकल्चर में क्या कर रही है? जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर टारगेटिंग दी रूरल एग्रीकल्चर, राइट? हम एग्रीकल्चर में कौन कौन से फील्ड्स पे काम कर रहे हैं? आई विल फोकस मोर ऑन फर्स्ट दैट पार्ट. अगर हम सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट. एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट एक वन ऑफ दी DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. उसमें बेसिकली 3 रजिस्ट्री जो है वो डेवलप की गई है. एक है मैप रजिस्ट्री, मतलब जो भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड आ रहा है वो रिकॉर्ड हम एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं जिससे सारे यूजर्स को वो बेनिफिट हो सके. सेकेंड वन इज द क्रॉप रजिस्ट्री, जिसमें हर एक पार्सल पे क्या क्रॉप है उसका फिजिकल सर्वे होता है एंड सारे क्रॉप की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट करते हैं. थर्ड वन इज़ द फार्मर रजिस्ट्री. फार्मर रजिस्ट्री ये है कि हम जैसे आगे हमने सुना कि बालाजी ने जैसे इन्फॉर्म किया कि एक कैटल का एक आधार रिलेटेड है, तो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आधार. सो गवर्नमेंट केम अप विथ वन थिंग कि व्हाई नॉट हैव आधार रिलेटेड सिस्टम, आधार काइंड ऑफ सिस्टम फॉर द फार्मर्स. हम अगर फार्मर को एक यूनिक नंबर देते हैं, 11 डिजिट का एक यूनिक नंबर है, जिससे हम फार्मर की सारी डिटेल जो है वो वहाँ से ही वेरीफाई कर सकते हैं. क्या डिटेल आएगी? अगर हम मैप रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैप रजिस्ट्री में जितने भी स्टेट्स के पास उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डिजिटाइज थे वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल हैं.
अगर हम क्रॉप रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15 स्टेट्स जो है वो ऑनबोर्डेड हैं। हर एक सीज़न में, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारी 2 से 3 सीज़न होती है स्टेट टू स्टेट। हर एक सीज़न में वो 10 से 15 करोड़ सर्वे कंडक्ट होता है, जहाँ पे एवरी सर्वे नंबर वाइज you will get crop, the photo of the crop, the lat long information, then एक उसमें मल्टीपल फोटोज भी आएंगे, उसका एरिया कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हर एक स्टेट में जाती है विथ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ सर्वेयर्स डूइंग दैट। थर्ड जो है फार्मर रजिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज ऑलमोस्ट 8 करोड़ फार्मर्स जो है वो सिस्टम पे रजिस्टर्ड है। दैट मीन्स यू नो कि ये जेन्युइन फार्मर्स हैं 8 करोड़ जो हमारे सिस्टम पे अभी डिफरेंट बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट द सेंट्रल लेवल। नाउ इफ यू आर कमिंग एट द स्टेट लेवल कि एमनेक्स स्टेट लेवल पे क्या काम कर रहा है जो रूरल को इम्पैक्ट करेगा। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो गुजरात गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से रन कर रही है। वो प्रोजेक्ट को शॉर्ट में कृषि प्रगति जो है वो बोला जाता है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन कृषि प्रगति। फर्स्ट कंपोनेंट इज कि यूजिंग अ सैटेलाइट डेटा आप उसमें से डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करोगे एंड यू विल यूज इट फॉर द डिसीजन मेकर एज वेल एज फॉर द फार्मर्स। सेकेंड जो है वो कृषि प्रगति मोबाइल ऐप है, जहाँ पे आज के टाइम पे मोर देन 5 लाख फार्मर्स आर रजिस्टर्ड एंड उनको डिफरेंट सर्विसेज मिलती है। थर्ड जो है वो कृषि प्रगति कमांड सेंटर है जो कृषि भवन गांधीनगर में है। वो कमांड सेंटर से स्टेट जो है वो पूरे गुजरात का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर कर पाएगा। नाउ इफ़ वी टेक वन बाय वन दिस थिंग्स, अगर हम डिफरेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं देन ये रिपोर्ट्स क्या मिलेगा कि अगर गुजरात 3 सीज़न में काम कर रहा है एंड मोर देन 18,000 विलेजेस आर देयर, हम हर एक सीज़न में उसका क्रॉप का एकरेज जो है वो ट्वाइस इन अ सीज़न कैप्चर करेंगे। दैट मीन्स पूरे गुजरात के खरीफ सीज़न में जितने भी क्रॉप्स है वो क्रॉप्स को आप सैटेलाइट डेटा प्रोक्योर करोगे, उसको प्रोसेस करोगे एंड देन एट दिस सर्वे नंबर लेवल यू विल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट कि कौन से सर्वे नंबर पे कौन सा क्रॉप है और उसका एरिया कितना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्रॉप की यील्ड कितनी होगी, यील्ड इज ऑल्सो एस्टिमेटेड बाय अ मॉडल, AIML मॉडल भी यूज़ होता है और उसमें एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का एक मॉडल है सेमी फिजिकल मॉडल, वो मॉडल यूज़ करके उसकी यील्ड भी जो है वो मॉनिटर की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर रिपोर्ट्स एज वेल। ओवरऑल आपकी क्रॉप हेल्थ कैसी रहेगी, इफ़ दे नीड दिस डेटा एवरी 15 डेज आप उनको वो प्रोवाइड करोगे एंड यू विल ऑल्सो हाईलाइट दोज एरिया जहाँ पे 15 डेज में क्रॉप की हेल्थ अप हो रही है या डाउन हो रही है। सो जहाँ पे भी डाउन होगी ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन टेक अ डिसीजन और वो एरिया पे आप प्रिवेंटिव एक्शन या करेक्टिव एक्शंस आप ले पाओगे। देन जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो फार्मर्स के लिए है, अब ये जो भी डेटा हमारा डिफरेंट सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू वेदर, इट कुड बी रिलेटेड टू सॉइल या आपका सैटेलाइट बेस्ड जो भी डेटा है, वो सारा डेटा फार्मर्स को उनकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम उनको प्रोवाइड करेंगे। नाउ व्हाट इज़ अ बेसिक स्टेप, फार्मर जब भी वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा उसको उसका फील्ड मार्क करना है। वेरी इजी टू लोकेट द फील्ड, आपको सिर्फ अपना विलेज का नाम, उसका सर्वे नंबर डालना है एंड इट विल बी रीडायरेक्ट टू योर सर्वे नंबर एंड ऑन स्क्रीन क्लिक करके आप उसका जो बाउंड्री है वो मार्क कर सकते हो। वंस यू मार्क दैट बाउंड्री एंड वो सीजन में आपने कौन सा क्रॉप लिया हुआ है वो 2 तरीके से आपका वैलिडेट हो जाएगा। एक, आपने एक्चुअल में वो क्रॉप डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, वो एक तो सैटेलाइट से हम वेरीफाई कर लेंगे। सेकेंडली वी विल बी हैविंग योर लोकेशन। सो जब भी हम पर्सनलाइज एडवाइजरी फार्मर्स को देते हैं तो इट्स नॉट अ जनरिक एडवाइजरी कि ये डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वेदर कंडीशन ऐसे रहने वाली है। इट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू योर विलेज और तालुका कि यहाँ पे आपको ये कंडीशन होने का चांसेस है, बिकॉज जो हम वेदर डेटा लेते हैं उसमें वेरिएशन आपको 7 to 8 किलोमीटर से मिल जाएगा, राइट। सो अब जब हम फार्मर ने ये डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है तो उसको कौन कौन सी एडवाइजरीज हम प्रोवाइड करते हैं। सो वन इज़ दी वेदर रिलेटेड डेटा। सेकेंड, अगर नियर बाय एरिया में कहीं पे पेस्ट एंड डिसीज होने के चांसेस है तो फार्मर विल बी नोटिफाइड कि आपके नियर बाय एरिया पे कॉटन में पर्टिकुलर केस जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, तो उनको वो नोटिफिकेशन मिलेगा। देन आपके एरिया में आपका जो फील्ड है उसकी हेल्थ कैसी रहे, उसमें मॉइस्चर कंडीशन कैसी है, वेदर टू गो फॉर इरीगेशन और नॉट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। व्हाट शुड बी द आइडियल हार्वेस्टिंग टाइम, आपका क्रॉप कंडीशन के बेस पे वी विल नो कि आपकी सोइंग टाइम टेंटेटिव क्या होगी। देन बेस्ड ऑन दैट सोइंग टाइम एंड बाय इंटीग्रेटिंग द वेदर रिलेटेड डेटा आपको उसको आइडियल कौन से टाइम पे उसको हार्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिले।
सो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम उनको एज अ पर्सनलाइज एडवाइजरी फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं. नाउ दिस इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन कि जो हम डेटा दे रहे हैं और फार्मर सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहा है. टू वे कम्युनिकेशन कैसे होगा? फार्मर भी हमारी टीम के साथ इंटरेक्ट करता है. वो इंटरेक्ट कैसे रहेगा? जैसे अगर कोई भी जगह पे उसको पेस्ट एंड डिसीज है, इल जस्ट क्लिक अ फोटोग्राफ एंड पहले तो उसको बेस इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी कि व्हाट इज़ द क्रॉप, व्हाट इज़ द डिसीज एंड व्हाट शुड बी दी करेक्टिव एक्शन इन केस ये आपको रिपोर्ट हुआ है. सेम डेटा हमें कमांड सेंटर पे भी मिल रहा है. सो वी विल नो कि क्लस्टर्स जहाँ पे हर एक क्रॉप वाइज, हर एक डिसीज या पेस्ट वाइज आपको डिफरेंट फार्मर्स ये जो क्वेरीज जनरेट कर रहे हैं. सेकेंड होगा, अगर आपको क्रॉप रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है, अगर आपको नेक्स्ट सीजन में आइडियल क्रॉप कौन सा होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन पूछनी है, ये सब आप जो है वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो. तो ये रहा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट. एंड द थर्ड वन, my request would it can it be summarized in a minute, or we also या want या Yash या bhai's सो opinion? जस्ट द थर्ड पार्ट इज कि जो हमारा कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर से ये जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सब आप यहाँ पे देख पाओगे. सो यू नो इन अ समरी, ये जो भी डेटा हमारा जनरेट होगा यूजिंग सैटेलाइट और वेदर डेटा, राइट, ये सब फार्मर्स डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दे कैन टेक द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस डेटा. थैंक्स प्रतीक, इंटरेस्टिंग स्टफ. वी वुड हैव लव टू डीप डाइव इनटू इट. बहुत सारा काम गवर्नमेंट के साथ आप कर रहे हैं, बट इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम वी हैड टू कट इट अप. यश भाई, कमिंग टू यू, आपने 2-3 अलग अलग एंगल्स सुने जहाँ पे देर इज अ स्टार्टअप हु हैज वर्कड ऑन अ डीप टेक्नोलॉजी. एट द सेम टाइम देर इज अ लार्ज स्केल एजेंसी हु इज वर्किंग एंड implementing it with the state bodies. Now we go to Yash bhai, who has been working with technologies for rural in his incubator. Almost 2.5 decades now in agri and along with Dvara Agri University. What we want to understand from you है कि आपके पास किस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट लेट्स से 5 to 10 ईयर्स में अगर सिर्फ हम लोग रूरल और एग्री पे फोकस करें तो क्या हार्डवेयर पे फोकस करने की ज़रूरत है? AI लेड सॉल्यूशंस के लिए ज़्यादा स्कोप है? किस तरह के सॉल्यूशंस पे आप आज काम कर रहे हैं? वी हैव अबाउट 5 minutes टू कवर दिस. ओवर टू यू. Ji, thank you very much. So I'm here to represent part of assisted SDAU Rural Business Incubation Center. So at our incubation center, we support agri and rural startups. If we talk about deep tech startup, like after listening to both of the like fellow panelists, what I feel is that India now is no more a consumer of innovation. Rather, like knowing from Balaji what he is doing, we can say that rural space is like becoming a creator of innovation. So that is something very much important that has changed the scenario over the period of time. What I feel is that previously it used to be like the technology used to be coming from the larger cities, like cosmopolitan cities and all that. But now, because of the initiative taken by NABARD of establishing such kind of RBICs across India, also if we talk about government of Gujarat or like government of India, we are doing good, fantastic into startup portfolio. So again, SSIP in Gujarat, this is leading and this is changing the scenario of understanding startups. And just because of this kind of partnership with SAUs particularly, startups are coming up from a very rural space because 65% of our population still resides in rural space. And how wonderful it could be that those challenges faced by the 65% population can be solved within that periphery, within that region by their own experts. That will definitely bring in change. As Balaji said that you cannot bring in someone from air condition and trying to solve the problems of rural space. So yes, again addressing the question which you said about AI or hardware, what I feel is both of them, they complement each other. If we see hardware as a kind of if we see hardware from body perspective, then AI is the brain. That's what I feel. Both of them are important. The important thing is that the convergence part. How wonderful it could be that we can have that kind of technology for those farmers, because ultimately the startups, their end users will be farmers or the FPOs in mass. So how wonderful it could be that these startups can come up with this idea to make farmers export ready, earn foreign revenue from the country as a larger perspective. Apart from that, yes, there are startups for working with us who are into deep tech, agri fintech, whatnot. So that's something which I feel that in present scenario, the problem should be identified from the rural space, and there are efforts by the government, institutes like NABARD, to address queries just from the heart of the India, that's the villages. Thank you.
Thanks, Yash bhai, and fantastic work at the university and the incubators, and our congratulations to you. We would have loved to continue, but हमको organizer से 2-3 red signal मिल चुके हैं. Before they cut our challans, I think it is better we conclude it here. So that's it from our side of the panel. अगर आपके किसी भी तरह के कोई questions हैं किसी भी panelist से related, I think you can take it outside after this session gets over. Thank you.